Hello, dear students, and welcome you all in this next class. And today we would be discussing something about the characteristic and design values. So, if you remember from the last video, we had discussed in the introduction to the limit state method. These were the four different points, and from where I have noted this from section 5. If you see it from the section 5 of IS 456. Now all of you can check in the section 5 of IS 456. It's about the limit state method, and there are certain requirements of safety and serviceability requirements. And if we study in the general, there are 4 points that I have highlighted, and the same points I have copied in my notes. So the first point we discussed about the limit state, a hypothetical state, a state or condition in which we check for the acceptable limit for the safety and serviceability requirements before the actual failure happens. Means we are not going to reach a limit state, क्योंकि limit state पहुंचने से पहले ही structure will fail. And the two conditions of safety and serviceability we have seen in detail. But the next point for important for design which we saw there was that for ensuring the above objective, the design should be based on characteristic values for material strengths and applied load. See, in any case we have discussed there are two things, cause and effect. Cause is the load and effect is the deflection. So we take the load, characteristic load, and for the deflection we use the characteristic strength of material. Now in the design problem we don't use this characteristic value directly, but rather we use design values. The design values are derived from the characteristic values through the use of what? One factor, and that factor is written here, partial safety factor. One for the material strength and other for the loads. Actually this PDF is considered as the bible for the reinforcement concrete, and this has been designed by various competent authorities in India. So you can study the definition for the limit state of collapse. We have discussed it. There are different instability and overturning is discussed in it, and you can read it. And then comes the limit state of serviceability. We check two criteria, deflection and cracking under serviceability, so you can read it also. So now we are going to focus today more on the characteristic and design values and partial safety factor. How to calculate these things, characteristic values, and when we have calculated the characteristic values, it will be very easy to calculate the design values, because we just multiply or divide it with the partial safety factor. It is already written in the IS 456 very clearly, the definition for characteristic strength of material as well as the characteristic loads definition. You can check some keywords in this definition, 5% of the test result. So now we are going to discuss something from the characteristic strength of material. So material can be concrete और steel in our case, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं होगा. किसी भी मटेरियल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, कैपेसिटी होती है, हर मटेरियल की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है. एंड इवन अमंग्स द सेम मटेरियल द स्ट्रेंथ कैन वेरी फॉर द डिफरेंट सैंपल. और हम स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी डू द एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब यूजिंग डिफरेंट लैब apparatus, and we calculate different strength values like compressive strength, tensile strength, flexural strength, shear strength, torsional strength. So all these strengths are calculated in the lab for the different samples. Suppose if we have taken 100 samples and we did the compressive strength test on each sample and we have got 100 results. So which results we have to choose for the design? As per the definition of the characteristic strength goes, it is that value of strength of material below which not more than 5% of the test results are expected to fall. देखिए हमने 100 सैंपल्स लिए और उनके 100 रिजल्ट्स आए, एंड इफ वी प्लॉट अ ग्राफ
frequency versus strength graph, and this is also called normal distribution curve. So in this curve, if you see on the y-axis we have plotted frequency मतलब कितने बार कोई भी सैंपल का रिजल्ट कितनी बार आया, एंड ऑन द x-axis we have plotted the strength value. ठीक है, so we check there is one value of strength which is coming most of the time, and that value of strength is called mean strength. Okay, this mean strength is coming most of the time, that's why its frequency is most high. And there are few values of a strength, this is very high strength, and this value of a strength is coming very less time. If you see, its frequency is very less, and same goes with the less strength. इसे आप कैसे आसानी से समझ सकते हो इस कर्व को? एक क्लास है और उसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने उन सभी का एक टेस्ट लिया 100 मार्क्स का, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि 90% से ऊपर कुछ बच्चों के आएंगे, एंड अमंगस्ट 50 या 55 या 60 ज़्यादातर बच्चों के आएंगे, जो कि एवरेज मार्क्स होगा. और हम यह भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ बच्चे, बहुत ही कम बच्चे फेल भी करेंगे. सो इट्स अ सिमिलर काइंड ऑफ कर्व, स्ट्रेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी. तो इस तरीके के कर्व को कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. अगर हम एज्यूम करते हैं कि इस कर्व और फिर एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया कवर हो रहा है वो 100% एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया कितना है? 100% है. इस पूरे 100% एरिया का जो 5% एरिया है वो मैं सबसे पहले उसे मैं डिमार्केट कर लेता हूँ. तो मैंने इसे 5% एरिया को मैंने देखा कि ये इतना 5% एरिया है, ठीक है. और इस 5% एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मुझे मिल जा रही है, ये वाली वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, इस वैल्यू को मैं कहूँगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. अगर थोड़ा कॉमन सेंस से सोचो तो जब भी स्ट्रेंथ की बात होती है तो स्ट्रेंथ छिपा करके बताया जाता है. अगर मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, फिर भी अगर मुझे कोई चैलेंज करे तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है? नहीं, मैं बस अपना 5% ही बताऊँगा, ताकि मैं 95% एश्योर्ड रहूँ, रिजर्व्ड रहूँ कि अगर इमरजेंसी आती है तो आई हैव रिजर्व स्ट्रेंथ and I can use it in that situation. So the characteristic strength is the value of a strength of material corresponding to only 5% area of normal distribution curve. That's why definition goes like this: it is that value of a strength of material below which not more than 5% of the test results are expected to fall. मात्र 5% सैंपल हैं जिनकी स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम है, रेस्ट 95% पास है. तो 5% को हम इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि उतना तो होगा ही, तो हमारे पास 95% फिर भी एश्योरिटी है. सो दैट वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू 5% एंड नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स इज कंसिडर्ड एज द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ फॉर द मटेरियल. नाउ इफ यू लुक एट दिस कर्व, वी कैन डेराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द मीन स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. मीन स्ट्रेंथ किसे कहते हैं? एवरेज स्ट्रेंथ को. सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स. अगर सिग्मा मेरा स्ट्रेंथ है तो उसे मीन स्ट्रेंथ बार 1 लगा देते हैं. आपने सारे सैंपल्स के रिजल्ट को ऐड किया और 100 से डिवाइड कर दिया, मीन स्ट्रेंथ पता चल गया. बट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ. FCK इज इक्वल टू F मीन माइनस 1.64 टाइम्स S. एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी ऑब्वियस. आप खुद ही सोचो कि मीन स्ट्रेंथ जो होगी वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी. और उन दोनों के बीच का जो गैप, दिस इज इक्वल टू 1.64 टाइम्स S. अब ये 1.64 टाइम्स S कैसे आता है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में अगर आपको पता हो कि आप किस एरिया के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालना चाहते हैं तो बहुत ही आसान होता है. एंड वी नो द परसेंटेज एरिया इज 5%, और 5% के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या कांस्टेंट की वैल्यू होती है? 1.64. ये कहाँ से आता है? ये आता है प्रोबेबिलिटी, अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है 1.64. ये कांस्टेंट है. 2.5% बोलूँ तो ये वैल्यू बदल जाएगी, 10% बोलूँ तो ये वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है. और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है S से. व्हाट इज दिस S?
S is the standard deviation for a strength. स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक पैरामीटर होती है, प्रोबेबिलिटीज़ में कैलकुलेट करते हैं, जैसे आप मीन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? S इज इक्वल टू कंप्लीट रूट अंडर, डेनोमिनेटर में n-1 है, ध्यान दीजिएगा, n नहीं है। नंबर ऑफ सैंपल इफ इट इज 100 यू हैव टू डू n-1, दैट इज इक्वल टू 99। और न्यूमरेटर में समेसन है, समेसन का ये सिंबल है सिग्मा। किस किस चीज़ों का समेसन है? एफ मीन माइनस इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ ईच सैंपल वेयर आई स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट सैंपल and it goes up to the n sample, and we have to go on adding the squares of the differences, and then we have to divide it by n-1, and we have to take the complete under root, and then we will get the value of standard deviation. I hope this is very clear, and if you don't understand this concept, you can also watch a video on the YouTube, the same channel. This is named as strength and load for limit state method. हम अपनी स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाते नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है तो दिखाते हैं। And we also have done a tutorial video, and we will share you that link also. You can see how we have calculated the characteristic strength. All right, and you can easily understand why minus sign is used in formula here, because characteristic strength was less than the mean strength. Now after discussing this, we can also check in the IS code definitions for the characteristic load, and the main keyword here is 95% probability of not being exceeded during the life of the structure. So similarly, we have written in this note also that characteristic load is that value of load which is going to be exerted on the structure, which has a 95% probability of not being exceeded during the entire service life of the structure. So if you have understood the concept of characteristic strength, it will be very easy to explain you the concept of characteristic load also. So a similar kind of graph we also plot for calculating the characteristic load. If we have a statistical distribution of loads which is going to come on the structure, and we plot it with respect to frequency, then we again get a curve like normal distribution curve as in the previous case. And in this case, if we assume the entire area that is subtended by the normal distribution curve upon x-axis to be equal to 100%, then the characteristic load is that particular value of load which corresponds to the 95% area of the curve, this value, and this is my 95% area of the curve. So this value of FC which you are seeing is considered as characteristic load, and since the percentage of area is again here similar like in previous case, earlier it was 5%, now it is 95%. In normal distribution curve, the constant for x percentage is same as the constant for 100 minus x percentage. You agree with this? So k for 5% will be same as the k for 95%, which is equal to 1.64. All right. So we can easily calculate the mean load. How do we get it? That load which occurs most of the time, or average load. The relationship between characteristic load and mean load is that FCK is equal to F mean plus KS. What is this KS? K is the constant and K is equal to 1.64. S is the standard deviation for load. So you can see clearly in this curve that characteristic load is more than the mean load. So we will obviously use the plus sign here. But don't worry, most of the time statistical data for the loads is not available. So that's why I have told you that we refer to different IS codes 875 part 1, 2, 3, 4, 5 for calculating different loads. So for calculating characteristic load,
we are not going to use this curve, but of course we use this curve for calculating the characteristic strength. Now after calculating this characteristic value of strength and the load, what do? क्या करें? डिज़ाइन प्रॉब्लम में इनका कैसे यूज करें? तो डिज़ाइन प्रॉब्लम में हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यूज नहीं करते, ना ही कैरेक्टरिस्टिक लोड यूज करते हैं. तो क्या करते हैं? वी यूज design strength and design load. But obviously the question will come, how can we get the design loads and design strength from characteristic load and characteristic strength? So there is a linear relationship between the two, and we get it with the help of partial safety factor. So first of all, I would like to explain you that partial safety factor is represented by a Greek letter gamma, and gamma is always greater than 1. There is no meaning when gamma is equal to 1. Now partial safety factor are of two types. One is for the material strength, and this is represented by gamma m. Another is the partial safety factor for loading, and this is represented by gamma f. So let us check how do we calculate design values from the IS 456. So it is written that the design strength of material is given is equal to F divided by gamma m, and you can check it here also. Gamma m should be taken as 1.5 for concrete and 1.15 for steel. ये दोनों वैल्यूज़ आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसे आप याद रख सकते हैं. एंड व्हेन वी डिवाइड द FCK by gamma m, we get design strength, and FD is equal to FCK by gamma m, and this is written from the code. So this gamma m values are already incorporated in the equations for limit state design. ये इक्वेशंस जब हम IS कोड से यूज करेंगे तो उनमें ये दोनों वैल्यूज़ ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, हमें अदर से यूज नहीं करना है. बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस वैल्यूज़ बिकॉज यू विल ईजिली अंडरस्टैंड द प्रूफ्स ऑफ दोज इक्वेशंस. नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट द डिज़ाइन लोड्स? सो इट इज़ रिटन इन द IS कोड दैट द डिज़ाइन लोड FD इज गिवन बाई F times gamma f, and capital F is characteristic load, and gamma f is what? Partial safety factor. One very important thing to be noted here is that when we calculate the design strength, तो क्या करते हैं? Characteristic strength से divide कर रहे हैं. Divide करने पे क्या होती है? Gamma m is more than 1. तो अगर आप किसी भी strength की वैल्यू को अगर किसी एक क्वांटिटी मोर देन 1 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? और भी छोटी हो जाती है. मान लिया जाए आपके पास 150 kg का स्ट्रेंथ है और मैंने बोला 1.5 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाओ, तो आप बताओगे कि अब मेरी स्ट्रेंथ 100 kg की है. आप समझ रहे हैं? तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ इज इवन लेस देन द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वेयर एज इन द केस ऑफ डिज़ाइन लोड we multiply the partial safety factor which is greater than 1 to the characteristic load. कैरेक्टरिस्टिक लोड मान लिया जाए अगर मेरे ऊपर 100 kg का आने वाला है तो मैंने बोला 2 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाओ अपने ऊपर लोड के ऊपर, तो अब मैं बोलूँगा कि डिज़ाइन लोड जो है आने वाला 200 kg का है. लिमिट स्टेट की क्या अच्छाई है कि सबसे पहले तो हमने बस 5% स्ट्रेंथ लिया मटेरियल का, जबकि लोड का 95% प्रोबेबिलिटी लिया. ऊपर से स्ट्रेंथ में हमने और भी गामा एम से डिवाइड करके उसे और भी कम किया, और लोड में गामा एफ से मल्टीप्लाई करके लोड को और बढ़ाया. अब इन दोनों को मुझे मैच कराना है. इस स्ट्रेंथ से मुझे इस लोड को झेलना है, और इसको कैसे झेलना है? डिज़ाइन करके. कितना क्रॉस सेक्शन प्रोवाइड करना है, कितनी स्टील प्रोवाइड करनी है. So this is the basic concept of limit state method. Partial safety factors for applied loading. This is represented by gamma f as you have seen, and design load which is represented as FD is equal to characteristic load F multiplied by gamma f. और gamma f क्या है? Partial safety factor for applied loading. And from where do we get the values of gamma f?
This is listed in table 18 of IS 456. I hope we have discussed this table in the previous class for calculating the load combination. Different load combinations दिए हुए हैं और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगाने हैं सभी पे, डेड लोड पे क्या लगाना है, इन्फ्लुएंस लोड पे क्या लगाना है, विंड लोड पे क्या लगाना है, सारे केसेस में दिए हुए हैं। ठीक है, ये किस केस की बात कर रहा हूँ, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की। अगर आपको लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी करनी है तो इसमें भी यही दिया हुआ है, बट बेसिकली इसमें मोस्टली वन ही होता है, तो हमें बस मोस्ट ऑफ द केस में हमें ये यूज करना है। सो यू कैन चेक ऑल दिस फ्रॉम द नोट्स एज वेल एज फ्रॉम द IS कोड। आपको याद होगा WSM में हम क्या करते हैं, WSM में हम फैक्टर्ड लोड यूज करते हैं, एंड फैक्टर्ड लोड इज द लोड multiplied by the certain load factor. Working load used to be given in this situation, and you have to multiply it with certain load factor. Load factor used to be greater than 1, always 1.5, mostly 1.5, and you design for the factor load in WSM. So you don't have to be confused actually. In this course actually we call factored load as डिज़ाइन लोड, और आप जो लोड फैक्टर आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा उसे भूल जाओ और अब क्या पढ़ो, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड. सो एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, and ignore the WSM for this course. So this was all, and in the next video we will be discussing the next topic. Till that, stay tuned. Thank you.